आपके फादर एडवोकेट हैं? आप सिरोही सिरोही डिस्ट्रिक्ट है सिरोही। वो सिरोही में प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ। काफी अभी इसमें है प्रोफेशन में एडवोकेट है। कब किया है LLB? 19 में किया है, 3 साल हो गए। ओके, कहाँ से किया? JNU जोधपुर से। सुरू के पास है। क्या क्या पका लेते हैं आप? काफी कुछ, जैसे विशेष कोई चीज बना लेते हैं अकेले? ओके। तो बाकी नहीं बनाते हैं तो किस चीज में, ओवन में या ओवन में? कभी उनमें कंडों में बनाइए या नहीं? ओवन काम लेते हैं। कंडों में तो राख वाख फैलती है, आइडिया नहीं। कभी देखा नहीं क्या बनते हुए? नहीं देखा। कंडे तो देखे आपने? नहीं कंडे नहीं, कभी गांव से बिलोंग किया है अपने कोई विलेजेज में, कभी कोई ऐसा कंडा किसको कहते हैं? नहीं, छाने जो गाय के गोबर का जो होते हैं उसके बोलते हैं उसको। हो सकता है सिरोही में कुछ और बोलते हैं उसको। हाँ, उपला भी बोलते हैं। उनमें कभी पकाया है बाकी? तो आपके दिमाग में ये RJS की कैसे आई? जो फादर एडवोकेट हैं, तो यू कुड हैव बीन बेटर देयर इन द फादर इन योर प्रोफेशन। कैसे समझ में आया कि RJS करना है? आप 2 साल 3 साल आपने RJS की तैयारी में लगाई, तो आपने वकालत क्यों नहीं शुरू किया इस बीच? फादर का पोटेंशियल अलग था, मेरी जो कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, मुझे लगता है यहाँ पे उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप फादर के साथ ऑफिस में कभी बैठी हैं? कोर्ट गई नहीं कभी भी? एक्चुअली मैरिज हो गई थी 5 इयर्स पहले। अच्छा। उसके बाद मैंने LLB यहीं से करी, तो फिर वहाँ पे किया। हस्बैंड क्या करते हैं आप? सर हस्बैंड इज आल्सो LLB। अच्छा, वो कहाँ है? सर जोधपुर हाई कोर्ट में। जोधपुर। इट इज ऑल द मोर रीजन दैट यू शुड प्रिफर फॉर एडवोकेसी। वो सर ही विल आल्सो प्रिपेयर फॉर RJS। ही इज आल्सो प्रिपेयर। दोनों इस बार वो भी दे रहे हैं क्या RJS के? नहीं सर, वो अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करें। ठीक है। ये जो मजिस्ट्रेट होता है ना, दूसरा वाला रहेगा हस्बैंड वाइफ का। ये मजिस्ट्रेट अपने जुडिशल से बाहर, अगर कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस में कोई किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करता है, तो वहाँ किसको पावर है कि वो जमानत दे सकता है? जिले से बाहर, जिसमें उसको जुडिशल से बाहर ले सकता है कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस में। और ठीक है, और अवेलेबल है तो अवेलेबल है तो जिस पुलिस ऑफिसर सर जिस कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा, तो वो मजिस्ट्रेट अवेलेबल वारंट दे रहा है साथ में, तो वो उसको रिलीज कर देगा। हाँ, वो SP या कार्य पर जो भी है वो कर सकता है अवेलेबल। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश और बोथ फाइन? ओके, राइट। देखो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि a person he leaves his residence for court to file a suit for which the limitation was 3 years, and the last day of limitation he leaves his house to reach the court to file the suit, and that was the last day of limitation. Now in between he meets an accident and he dies. Now how can or one can save the limitation or not by filing suit on the subsequent day when the suit was already barred? How can you help if you want, you are having sympathy, all other considerations to do justice? How can you help the litigant in that case, because limitation is 3 years, that expired today, he is reaching tomorrow. How can you help him? Under what provision of law? You could get me, na? You could get me? He goes to the court on the last day, meets the accident on the road, on the way, he doesn't reach the court, obviously cremation, everything. The second day or the third day, the legal heirs, they want to now file the suit. But then suit is barred by limitation.
Now, it is no fault on his part. He was never contemplating that he will meet an accident on the road, and that all happened. It was all misfortune. How can you save him from limitation? Is there any provision in the law? So basically, law is vigilant to only those who are vigilant to their rights. Good. So, sir, that's not possible, sir, because he has sufficient time period, like 3 years, and subsequent disability does not allow him to have a suit. So, any provision of the Limitation Act, whether Section 5 will not come to his aid, Section 5 of the Limitation Act for condonation of delay, that will not come to his aid, So, Section 5 it will not, because so because Section 5, like, applies to applications and appeals only, not to suit. Any other section, like Section 14 or other section? No, you are right. Your answer is complete. Good. Good reply. ये लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है आपने? राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट नहीं पढ़ा, सिलेबस में है शायद। अच्छा, यहाँ रख दिया है ना। रेंट कंट्रोल, रेंट कंट्रोल है आपके सब्जेक्ट में मास्टर। ठीक। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से बहुत सारे जजमेंट्स है एंड रिपोर्टेड जजमेंट्स। हाँ, बाइंडिंग जजमेंट, दोज विल बी बाइंडिंग ऑन यू आल्सो। चलिए, स्टे ऑफ द सूट, व्हाट इज स्टे ऑफ सूट? stay of suit. Sir, that's the rules, that is stay of suit, that's the Section 10 of Civil Procedure Code. If any suit is pending in a court, then no subsequent no court can try the subsequent suit. Any suit or So, the suit of jurisdiction and same nature. nature or what? So, suit of same nature and between same parties or litigated under the same title. Is it not the cause of action relevant? Is it not the cause of action? Fine. So it is always a subsequent suit which can be stayed under Section 10. Whether the first filed suit can be stayed in any circumstances. So, if lack of jurisdiction or any other reason for suit, The principle is that the cause of action, the parties must be same, the subject matter must be same of both the suits. The first suit is perfect, the second suit is also perfect, but the cause of action, these parties are the same, the subject matter is also the same. So, according to Section 10, the subsequent suit is required to be stayed, है ना, उसको रोक देंगे, जो प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी, पहला सूट पहले चलेगा, ठीक है ना। कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि फर्स्ट सूट इज टू बी स्टेड एंड सब्सिक्वेंट सूट विल कंटिन्यू, तो अंडर व्हाट प्रोविजन इट इज पॉसिबल टू स्टे द फर्स्ट सूट? इज देयर एनी प्रोविजन? not able to recall any such provisions. So, as per my opinion, second suit will be stayed. वो तो हो ही जाएगा सेक्शन 10 में। कोई ऐसा प्रोविजन है क्या सीपीसी में जिसका उपयोग करते हुए फर्स्ट सूट को भी स्टे कर दें? So sorry, sir, I'm not able to recall right now any such provision. What about section 151? Okay, so inherent powers of the court. Yes, sir. Whether this provision can be used to stay the first suit? Sir, inherent power can't be used for section 10, sir. No, we are not using section 10. एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि कोर्ट ये सोच रही है कि the first suit is the second suit is more substantial in comparison to the first suit. So, in the facts of the case, it is essential that the second suit is tried and decided first. Yes, sir. Sir, as per my opinion, only second suit will be stayed, sir. The first suit cannot be stayed. No, sir, In any I haven't circumstance? read any such provisions. So, No, sir, sir. no, sir, I can't be sure about that.
But you want to say that the inherent power 151, जी सर. can it override the specific provisions of the CPC? If there are specific provisions under the CPC, like section 10, section 11, can section 151 CPC can override those power procedures? Sir, it Your can. argument will be that, Yes sir. I think. But there are exceptions where the inherent power, it depends upon the nature of case and Yes what sir. is the issue, whether the broader issues are there in the subsequent issue. Those Yes, are sir. again to be judged on the basis of the facts of the case. Yes You sir. are right. ये सेक्शन 95 CRPC में प्रोविजन दी गई है जी सर. कि भाई किसी प्रकाशन को पब्लिकेशन में उसको अगर कोई ऐसी बातें जिसमें 95 दी हुई है 95 में, जी सर. उनको प्रिंट करने का ऑर्डर राज्य सरकार दे सकती है. जी सर. उसको आदमी को चैलेंज करना चाहता है कि साहब गलत हो गया, तो कहाँ जाएगा? सर हाई कोर्ट में. कोर्ट कितने जज सुनेंगे? एक सुन सकता है एसवी. सर 2 जज बेंच. सर 2 जज आई थिंक. कितने दिन के भीतर उस प्रकाशन जो पब्लिकेशन हो रहा है उससे कितने दिन के भीतर चैलेंज किया जा सकता है उसको? सर 6 मंथ. साक्षी, आपने अपनी हॉबी में देखा है कुकिंग, डांसिंग, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. यस सर. तो ये राजस्थानी कौन सा डांस है जो फेमस डांस जिसे राज्य का दर्जा दिया हुआ है? सर घूमर डांस. तो घूमर की क्या है विशेषताएं? सर घूमर बेसिकली घाघरा पहन के किया जाता है जो वो राउंड सर्कल्स में घूमते हैं सर, उसमें दैट इज स्पेशलिटी ऑफ घूमर. तो घूमर किसी स्पेशल एरिया में या पूरे राजस्थान में, जैसे भरतपुर, अलवर, इन एरियाज में भी घूमर ही चलता है? सर बेसिकली घूमर जो होता है वो राजपूत कम्युनिटी काफ़ी करती है. तो सर ये क्या कम्युनिटी का डांस है या राजस्थान का डांस है? सर जनरली तो ये मतलब भीलों से स्टार्ट हुआ था. उनकी गॉडेस सरस्वती को वो इंस्पायर करने के लिए किया करते थे घूमर डांस, और बाद में वो भीलों से राजपूत जो है महारानी वगैरह होती थी तो उन्होंने कंटिन्यू किया उसको. फिर अभी तो सर ऑल ओवर राजस्थान चल रहा है घूमर डांस. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएंगे, अभी उत्तर प्रदेश में जो जिन लोगों ने दंगा किया या जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने जाके बुलडोजर जो मकान ढा दिए, तो ये कौन से प्रोविजन में ढाए गए? क्या है, कोई प्रोविजन है कहीं पढ़ने में आया आपके लॉज में या कहीं ऐसा है ये पनिशमेंट? सर बुलडोज़र वाला आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट प्रोविजन सर, एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि उनको ये प्रिजुडिस टाइप हो गया. उनकी दूसरी पार्टी को सुने बिना उन्होंने वहाँ बुलडोज़र वगैरह कर दिया. तो सर मैंने ऐसा कुछ प्रोविजन सर पढ़ा नहीं है. अच्छा, अभी आपने देखा था कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे गोल्डन टेम्पल में. जी सर. तो वो कोई प्रोविजन है जिससे उन्हें पनिश किया जा सके? क्या अपराध किया जिन लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए? सर जिंदाबाद का नारा सर कोई ऑफेंस नहीं होगा सर. खालिस्तान का मतलब समझ रहे हैं आप? एक अन्य देश की मांग, इस देश से अलग करने की बात कर रहे हैं सर. दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट, बट मतलब उन्होंने अगर मतलब अपने देश को तोड़ने का राइट है? नहीं सर, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो डेफिनेटली कर सकते हैं. तो सीमाएं हैं. यस सर, डेफिनेटली. फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमा कहाँ दे रखी है? सर सेक्शन 90 सॉरी आर्टिकल 19 ओनली. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में. यस सर. तो क्या ये देश को तोड़ने वाली भी है? सर खालिस्तान सर अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद या सॉरी सर ऐसा कुछ बोलते तो डेफिनेटली वो ऑफेंसिव हो जाता. खालिस्तान जिंदाबाद का मतलब है वो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं. तो कहीं हमारे आईपीसी में कोई प्रोविजन है जिसमें तो जो पनिशेबल किया जाता है उनके ऊपर ट्रायल किया जा सकता है कि आपने गलत किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए? सर सेडिशन आई थिंक. सेडिशन की तो नहीं, सेडिशन में तो नहीं कोई और जगह आपने देखा वो वैसे भी धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, इधर योगी जी भी बोलते हैं. तो इन दोनों के लिए भी कोई पनिशेबल प्रोविजन है क्या आईपीसी में? सर धर्म के विरुद्ध डेफिनेटली है 153A एंड 295A. तो मैंने अभी 153 भी पूछा जो नारे लगाने वाला था खालिस्तान मुर्दाबाद. ओके सर. बिल्कुल. साक्षी जी, आपके नाम का भाव क्या है? सर साक्षी मीन्स विटनेस. और फेमस लॉ से जुड़े हुए हैं. जी सर. हाँ, लॉ से जुड़ा हुआ नाम हो गया. अच्छा,
सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके संबंध में कुछ बताएं। Yes, sir. The separations of power are between the three pillars of the Constitution: judiciary, executive, and legislative. Yes, sir. एक लिस्ट दे रखी है, स्टेट लिस्ट। Yes, sir. Concurrent list and central list. क्या मतलब क्या है इनका, 3 लिस्ट बनाने का क्या? जी सर, जी सर, ये शेड्यूल 7 में दे रखी है तीनों लिस्ट। उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर के मैटर्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी, एंड स्टेट के मैटर्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी, एंड कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डील कर सकती है उसके डील साथ। करेगी। इनके संबंध में कानून अगर बनाना है तो कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर आप बनाते हैं। यस सर, सर सेंट्रल लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट को राइट होगा कानून बनाने का, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्करेंट पे सर पार्लियामेंट का प्रिवेल करेगा लॉ। कोई स्टेट भी उस पर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कोई कानून बनाना चाह रहा है और सेंटर भी बनाना चाह रहा है। यस सर, दोनों में कंट्राडिक्शन है, क्या रहेगा? सर पार्लियामेंट वाला प्रिवेल करेगा सर, सेंट्रल वाला करेगा, लेकिन स्टेट फिर भी चाह रहा है, तो कोई प्रोसीजर है ऐसा कि स्टेट अपनी बात रख सके और वो अप्रूव हो सके? यस सर, सर एग्रीमेंट होता है, स्टेट्स मिलके एग्रीमेंट करके वो करवा सकते हैं। एक जैसे प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भी जी सर, जी सर, प्रेसिडेंट के असेंट के साथ अगर वो किया गया तो स्टेट वाला प्रिवेल स्टेट करेगा। गवर्नमेंट अगर बना रही है, कोई कानून बनाना चाह रही है उसी पर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, तो दोनों को पावर होती है, जी सर, पार्लियामेंट को भी है, स्टेट लेजिस्लेचर को भी। तो कोई प्रोविजन अगर ऐसा है तो उसमें फिर प्रेसिडेंट की एसेंट, यस अगर सर, वो एसेंट मिल जाती है तो स्टेट का कानून भी प्रिवेल करेगा उसी स्टेट के लिए। यस सर, यस सर। आजकल फ्रॉड वगैरह के केस काफ़ी हो रहे हैं, सुनते हैं अपन। सर विच केसेस? फ्रॉड वाले, फ्रॉड, धोखाधड़ी के केसेस हैं। जी सर, बैंकों से फ्रॉड वगैरह है, कंपनीज से फ्रॉड होता है। तो समझो किसी ने ये एलिगेशन है कि अपने तो फ्रॉड से जो पैसा लिया, इकट्ठा किया, उसने अपने बैंक खाते में जमा करा दिया। जी सर, FIR दर्ज हो गई, पुलिस या CBI ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अब बैंक अकाउंट को सीज किया जा सकता है। सर बैंक अकाउंट को सीज किया, मतलब सीज करने का मतलब है कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो पैसा जमा है वो जमा ही रहेगा, उसको विड्रॉ नहीं हो सकता। जिसके नाम से अकाउंट है वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। जो अक्यूज है, अक्यूज समझिए कि अक्यूज के नाम से अकाउंट है, उसने इलीगली ऑब्टेन्ड मनी उसमें जमा करा रखी है, उसके खिलाफ FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मालूम पड़ता है कि जो पैसा है वो उसके खाते में जमा है और वो कहीं निकाल नहीं ले उस पैसे को, तो पुलिस उसको सीज कर सकती है कि खाते को। sir, I haven't read any such provision, so I'm not sure about this, sir. नहीं, कोई पढ़ाई इस बारे में। Sorry, sir. सेक्शन 102 CRPC क्या है? सर वो पुलिस की पावर है सीजर करने की। क्या क्या चीज़ करते हैं उसमें? सर पुलिस को कुछ भी, पुलिस ऑफिसर को कुछ भी लगता है कि ये ऑफेंसिव है तो वो उस प्रॉपर्टी को सीज करवा सकती है सर। प्रॉपर्टी हो। जी सर। तो वेदर बैंक अकाउंट comes within the purview of property which can be seized by the police during investigation. So I'm not sure about that, sir. Sorry. Suppose एक immovable property. Let us take there is a house. Yes, sir. The owner of the house, he goes outside. When he come back, he finds that some antisocial element having broken the law, they have entered the house and they have possessed the property. This all happens in the night hour. One night he was out, second day he comes now. Is there any offence committed by the persons who have trespassed? The word trespass itself is an offence. They have taken over the position. Now whether the police can seize that house under the provisions of CRPC, I don't mean attachment under 146, 145. I mean whether the police can seize that house, which is subject matter of offence, immovable property. No, sir. No, sir. Police cannot seize the house, as per my Cannot seize opinion. the house. Yes, sir.
So immovable property is not there, Yes, sir. which can be seized by the police. Sorry, sir. House seizure. How do you rely upon that? Any provision? Yes, I'm not recalling the exact provision, but police cannot seize the house of. After some property is seized by the police, which is subject matter of offence, Yes, sir. court's power comes under 451 or 457 after judgment Yes, to sir. give the custody of the property, either interregnum or finally. So whether that will apply to the immovable property also, for which the offence has been committed, Yes, sir. That will apply to if the. that will apply, then why not the police can seize that property, immovable property? So police can seize the property, but not the whole house. I think. Property is the house where the persons have, in respect of which the offence has been committed. It is the property for which the offence has been committed. They trespassed, they took over the position, they ransacked the property. Yes, sir. But if it is a dwelling house, then where the. Debatable subject. Yes, sir. Definitely, sir. If it is a dwelling house, then where the people will live, so they cannot seize the whole house. I think. Okay. If the, suppose The accused is occupying the house. one house is there with 2 rooms or 1 room. Suppose let us take 1 room. Yes, sir. If we go to whole house, I say house is having 1 room only with a kitchen, and they have occupied the entire house. Whether the police can seize or not there for the offence is there or not? What is the offence committed? It's a trespass. Trespass. Yes, sir. Trespass and house लड़की House trespass. Yes, sir. दोनों आए तो उस केस में whether police can seize the house or not? No, sir. Sir, I think they cannot seize the house. A suit is pending in respect of an immovable property, Yes, sir. where the challenge is that the sale deed in favor of the defendant is void or voidable. Now, whether the property pending suit can be sold out by the third person or by any other person or by the parties to the suit, and what is the effect thereof? So the property can be sold, but subject to the judgment of the court. Right. Yes, sir. As per Section 52 of Transfer of Property Act. To abide by the judgment. Final Yes, sir. Final outcome of the court will affect the sale. The difference between void and voidable contract. Sir, void contract is generally void ab initio, but voidable contract is on the option of one party. And yes, sir. Give me example of any void contract. Yes, sir. So agreement to do any illegal act is void contract, but like misrepresentation of anything that will fall under voidable contract. Yes. This 160, Section 164 CRPC. Yes, sir. Section 164 is like statement and confession recorded by the magistrate. What is the procedure to record the confession of an accused? Yes, sir. So first of all, he'll be informed by the magistrate that the confession is going to be used against him, and then magistrate will record the demeanor of the accused, and if he is satisfied that he is doing this voluntarily, then only he will record the confession. What something extraordinary you will show, being an RJS or the judicial officer? You have something in your mind that if I am RJS, I will demonstrate something extraordinary so that I am the limelight, I can do justice to the people, I can dispose of the cases that are pending long back. What is your idea about, and what you have idea how to act on that? So my only aim to enter into judiciary was I'll be able to think about other people's right apart from my own rights. So sir, this is the main reason, and I'm sure that when I'll be thinking about other people's right, then I'll give my 100% to the service. So this is very pious service to do, so I'm waiting to enter into this. Suppose as a magistrate, you record a statement under Section 164 CRPC. Yes, sir.
whether you will be required to appear as a witness during trial of the accused to prove the statement recorded by you. Sir, I'm not able to understand the question. Can you please? Suppose as a magistrate, Yes, sir. in a case you recorded the statement of an accused Yes, sir. under section 164 CRPC, following all legal requirement. The statement was handed over to the investigation agency, and after completing the investigation, charge sheet was filed against the accused and trial commenced. Whether your appearance as a witness is essential to prove the statement recorded by you during trial. No, sir. The signature will be sufficient. I think. Why? So that is a presumption that if I have signed, then that will be recorded as per the 164 only. So it is admissible in itself. Yes, sir. This is admissible. The accused takes a plea during trial. The essential requirement of recording the statement were not followed by the concerned magistrate. Then, So that will not vitiate the proceedings. then, So that will not affect the proceeding as. then also it is not essential to appear as a witness and prove the statement and say before the trial court that I followed all the legal requirement, and after that it was recorded. So as per section 121 of Indian Evidence Act, if the superior court will order me, then definitely I'll be there. नहीं, वो तो है। Suppose that case is transferred to your court Yes, sir. for trial, where you find that yes, you recorded the confession statement under 164. Should you recuse from hearing that and ask the district judge or the transferring authority that please transfer to the other court, since I am the person or the magistrate who recorded the statement under 164? What should be your call in that? If you follow me, you recorded the statement under 164, confessory statement. Yes, sir. Now, after the charge sheet is submitted, it is to be, cognizance has to be taken and matter has to be tried. That case Yes, sir. is allotted to your court now. Now, should you recuse from hearing that case and ask the district judge that I being the officer, judicial officer who recorded the confession statement, or you should continue in the hearing? Sir, I'll continue the hearing because as per section 164 of CRPC, the magistrate who has jurisdiction can also record the statement. We don't dispute jurisdiction. The question is, it is question that you are definitely, you will be somewhere, it is a human nature, I don't say you are biased, it is a human nature that what you have recorded, you will stand by that. Yes. Even the accused retract the confession, right? So should we in that case, trial should be there in your court or you should recuse from the case? Simple, my argument is. What is your bona fide will say, what your conscience will say that in such cases, I should not hear this matter? So, What call will take? So, what I think is I will try the case without being biased, because definitely the accused will be corroborated and contradicted as per the evidence. So the final Now outcome. suppose, that is his question. Now suppose he is retracting the confession made before you. Yes. For any reason that yes, police people were standing outside, they were pretending me, and I was not in a position to tell anything out of my own volition. So I said what they asked me to say. In that case, what will do? Sir, but as section 26 of Evidence Act, the confession made before magistrate is sufficient in I itself. understand, but then you can't be that person who can be that rigid about giving of justice is concerned. He must not have any apprehension in his mind. Accused must not have any apprehension in his mind that he will somewhere be defaced by your considerations. So in that case, it is all, oh, you are right, it all depends. He can go to the district judge also that please transfer him. Yes, sir, definitely. It is not that you are the sole authority there. If you Yes, do sir. transfer, you don't recuse. Accuse has a remedy. He can go over the district judge and ask Yes, that sir. please transfer the matter because he recorded my confession statement which I retract.
Yes, sir. So you cannot be that rigid about. You should have flexibility in your thinking as a judicial officer. That is Yes, what sir. I am submitting. Yes, sir. If this thinking is there, it will somewhere it may create problem to justice-oriented approach. That is all. Yes, sir. So the accused has right to You appear. are right, and you have to protect the interest of the accused. If he have little apprehension in his mind that Yes, you sir. being the officer who recorded his statement, he may not get justice in your hand because he has to retract the confession also. What is wrong if you recuse and ask the district judge to transfer some other court? Why you should be that rigid? That shows your adamancy about the matter. That is all. Sorry, sir. Like I was like. I am on the flexibility that yes, in such cases, see, there are other magistrates, not that it is somewhere a court where you are the alone judge. Yes, sir. That's Definitely. something we can understand. Suppose in a case where there are 10 magistrates in the court, it can go to the other, how the justice will suffer. Yes, sir. So, but my point was like I should apply to the court or accused should apply. हो गया था तो आप कुछ नहीं और कुछ जैसे आपने अभी बताया ना वो जो पब्लिकेशन को फोरफिट करने को गवर्नमेंट ऑर्डर करती है उसमें आपने बताया 6 महीना तो मैं बताऊँगा आपको तो 2 महीना ही ओके सर. और 3 जज के द्वारा उस हाई कोर्ट में 3 से ज़्यादा न्यायाधीश जज है तो कम से कम 3 के द्वारा सुना जाएगा और 3 से कम है जितने हैं उन सबके द्वारा सुना जाएगा. ठीक है ना? जी सर. वैसे ठीक हाई कोर्ट सही है. जी सर. आई टेक केयर. You have rightly and nicely faced. We are happy. Congratulations. Yes, sir. Thank